Hey guys, welcome to this video. How to handle when prospects say, why should I buy from you? मैं आपसे क्यों खरीदूं और why should I do business with you? Why only you? And this is the objection which stops millions of salespeople to lose the sale. मैं आपसे क्यों खरीदूं? एंड इन दिस वीडियो मैं आपको वो साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगा जो प्रूवन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है और मैंने सीखी अपने मिलेनियर मेंटोर से और मैंने अपनी लाइफ में इसको इस्तेमाल किया और मैंने जिन लोगों को सिखाया है उनकी सेल 1 to 3 times sale within 1 year. Why? By applying this. My name is Ravi Sachan and I am the author of the book called Sales का सिकंदर. कैसे हैंडल करेंगे जब आपसे कस्टमर बोलेगा प्रोस्पेक्ट मैं आपसे क्यों खरीदूं? Let's say you are talking to somebody on phone and prospect say it's okay Mr. So and so but tell me why should I buy from you? Now एक कॉमन जो सेल्स का पर्सन है वो क्या करेगा? ये जो आम लोग सेल्स के लोग हैं वो क्या बोलेंगे? दे विल गो एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन. यू नो सर, मैं बिजनेस में 10 साल से काम कर रहा हूं. आई हैव दिस, आई हैव दैट, मैं वर्ल्ड क्लास सर्विस देता हूं, विच मीन्स ब्ला ब्ला ब्ला. प्रोस्पेक्ट डजंट इवन लिसन देम बिकॉज आपने क्या किया, उसने आपके ऊपर एक ऑब्जेक्शन फेंका और यू वेंट इनटू द प्रेजेंटेशन मोड. You are not supposed to give presentation at all, man. Yes. What you need to do, listen very carefully. अगर दिमाग कहीं और है यहाँ ले आइए because this will change your life. This will change your sale. I'm telling you, if you learn this, if you practice this. जब कोई बंदा आपसे बोले मैं आपसे क्यों खरीदूं, मैं आपसे बिजनेस क्यों करूं, then don't give any presentation. Here is what you do. You should say probably you should not, mister. You are right. Why you should do business with me? I don't know. But you must have asked this question for a reason. Can you help me out? Can you tell me why did you ask this question? And now, silence. What you did now is called reverse psychology. आपने उसके ऑब्जेक्शन को घुमा के उसकी तरफ कर दिया. Now you have also asked the question. He will answer you. आपने क्या बोला है? Yes, you should not work with me. I don't know. मुझे नहीं मालूम. But tell me, आपने क्यों पूछा? What is the reason why you ask it? What will happen? The prospect will tell you. He will say probably मैंने बहुत लोगों से काम किया, मैंने बहुत लोगों से इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदी हैं, लेकिन they cheated me. They tell me something different. So I have negative feeling towards the salespeople. Now you say, okay, I can understand, Mr. So and so. I can get it. In fact, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो आपने किया. I understand that. Yeah, because money is important. Now you say, Mr. Prospect, do you think if a person is working in the market more than 15 years and serving more than 500 satisfied people, customers, then there must be a reason why people work with the person? What do you think? What could be a reason that if anybody is having more than 500 satisfied clients working in the industry more than 10 years serving people, then what could be the reason why people work with that person? क्या हो सकती वजह? Now you ask again same question. अब वो क्या बोलेगा? हाँ, maybe उसका क्रेडेंशियल अच्छा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, नाउ सी द डिफरेंस. जो प्रेजेंटेशन मोड आप देते कि मैं 15 साल से मार्केट में काम कर रहा हूं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा वो है, मेरा ये है, वही बात मैं कस्टमर के मुंह से उगलवा रहा हूं. सी द डिफरेंस. दिस इज व्हाट आई डिड. नाउ द कस्टमर विल से यस मे बी दैट पर्सन इज क्रेडेंशियल, ही इज ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, एंड यू से एग्जैक्टली यस इट इज. देन यू से so let's say Mr. Prospect, if I show you these people, if I'll show you the experience of these people working with me in the form of testimonials, videos, letters and all, then that is something will help you to move forward. And then be silence. आपने क्या बोला है? आपने सिंपल बोला इफ आई कैन टेल यू, इफ आई कैन प्रूव यू, इफ आई कैन शो माई सक्सेस, माई क्रेडेंशियल, माई क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, देन
will you do business with me? Now be quiet. What he will say? Yeah, because my concern was the credentials and honesty and integrity, So then you say, okay. Then what I'll do, I will give you these people testimonials and all. You watch them, and then when can we do business together? Or you say, let's say you like them, you listen what you want to listen, you like them. Then what will happen next? आप next क्या करेंगे? And be silent. Yeah, probably we'll move forward. And then you say, good, congratulations. This is how you handle this objection. Now, आपको लग रहा हो यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है. यस, इट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच. वाई? बिकॉज इट टेक्स प्रैक्टिस. जब मैंने ये चीज़ें सीखना शुरू करी अपने मेंटोर से, आई यूज्ड टू disagree with him. Why? Because nobody has taught me this. That's why he taught me. Sales is not a number game. Sales is a skill game. What? Skill game. It's $1 million art and science. You have to learn it. It's a psychology. It's a communication. Understanding other people's emotions. Persuasion. एंड बहुत सी चीज़ें सारी बातें मैंने इस किताब में लिखी हैं जिसका नाम है सेल्स का सिकंदर. सो इफ एनीबडी आस्क यू एवर से व्हाई शुड आई डू बिजनेस विथ यू, देन यू डोंट से दिस इज द रीजन यू शुड वर्क विथ मी. ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द वर्ड. probably you should not. Why you should work with me? I don't know. And then reverse the game. If you are serious to learn this technique, आप चाहते हैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, तो दो तरीके हैं. एक तरीका है आई कोच 1-on-1 people, and of course when I coach 1-on-1 results come. You might have seen so many success on my YouTube channel and all. So if you are interested for that, you can schedule me a 1-on-1 half an hour free of cost mentoring session. I will tell you, but yes, you must be willing to spend a good amount of money on a monthly basis. Yeah. Second way, I have started a monthly mastermind, a group program, where there must be around 50 to 100 people and a very nominal cost. How much? Approximately 1,000 rupees. And this will last for 1 year. Same thing, but the difference is वहाँ पे आप ग्रुप में सीख रहे हैं, यहाँ आप मुझसे अकेले लर्न कर रहे हैं. You choose what way you want to work. At the end, the description will be there. Just go there and schedule a session with me. You deserve a success, man. And sales is $1 million skill. Sales has changed my life, and I am helping many people to change their life, because I am on a mission to help 1 million life insurance and financial planner to change their life. If you want to be one of them, be with me. I will help you out, and you deserve all the success. Thank you very much. All the best.